व्यूअर्स साहिया खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं ऐं हिन वक़्तु तमामु बहितरीन डॉक्टर असांखे जॉइन करे चुकिया आहिनि। संदन नालो डॉक्टर सैयदा सदफ़ साहिबा आहे ऐं पाण इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर आहिनि। त इन सां अंदाज़ो तव्हां लॻाए सघो था त अॼु असांखे केतिरी सारी इन्फॉर्मेशन मिलण वारी आहे। सो वेलकम कयूं था डॉक्टर सैयदा सदफ़ साहिबा के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा, ऐसे ही आप सेहतयाब रहे, हमारे जो देखने वाले हैं वो भी ऐसे ही सेहतयाब तंदुरुस्त रहें। तो आज जैसा कि आलमी दिन है ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चनिंग बना के आई हूँ, एक क्वेश्चन एयर है पूरा आपके लिए तो हमारे एक और डॉक्टर भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमें हमारे जितने भी देखने वाले ऑडियंस हैं उन सबको व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले मेरा सवाल है कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि टीबी भी एक बीमारी अगर है तो वो है क्या। बिल्कुल, देखिए टीबी जिसे हम उर्दू में जो है तपेदिक की बीमारी भी जो कहते हैं, ये बेसिकली जो है एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके ज़रिए जो है ये बीमारी होती है सीमस को। और टीबी को जैसे हम लोग समझते हैं ना कि टीबी सिर्फ जो है फेफड़ों की एक बीमारी होती है, लेकिन किसी को जो है आंतों की टीबी भी हो सकती है, गले की टीबी भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है टीबी लोगों को जो है लाक हो सकती है। तो इसमें ये कि जो जैसे उन लोगों को जो है ज़्यादातर लोगों को जो है फेफड़ों का जब मसला होता है, यानी कि जब फेफड़ों की टीबी जब लोगों को होती है, तो फिर उसमें जो है बेसिक लोगों को जो है बुखार, खांसी, बलगम जो है कभी जर्द रंग का होता है, कभी येलो कलर का होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट, जिस्म में दर्द, तो इस तरह की जो है बेसिक अलामात होती हैं। उसके बाद जैसे देखिए टीबी जो है ना बेसिकली एक फैलने वाली बीमारी है। ये जो मुतासरा फ़र्द होता है, बिल्कुल जो मुतासरा फ़र्द होता है उसके खांसने से, छींकने से, यानी कि उसके थूक के ज़रात से भी, उसके बलगम से, उसके जो खांसी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ज़रिए ये बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए अगर किसी को टीबी हो जाती है तो उसमें सबसे पहले उसको तो जो है एहतियात ये करनी चाहिए कि वो अपने आप को एक सेपरेट जोन में कर ले। सेपरेट जोन से मुराद ये कि उसके खांसी, उसके छींकने से बाकी दूसरे लोगों को, स्पेशली जो उसके घर के अफराद हैं, इर्द गिर्द उसके जो लोग हैं, उनको जो है वो इससे इफ़ेक्ट ना हो। तो बेसिकली टीबी में जो है ये वाली एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक तरीके से जो है मुतादी मर्ज़ है जो बहुत तेज़ी से अगर एक घर में किसी को है तो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को बहुत जल्दी हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आपने भी सिम्टम्स बताए, लेकिन प्रिकॉशंस स्पेशली मैंने ये भी बताया था कि आपके जो है बर्तन भी अलग होने चाहिए, आप जहाँ पर थूकते हैं वो जगह आप जल्द से जल्द क्लीन कर लें, क्योंकि ये हवा में कितनी देर तक रहता है ये जो बैक्टीरिया है, इसका आप हमें बता सकती हैं? देखिए हवा में रहने का तो क्योंकि देखिए ना वो तो फिर आपके उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस ऑब्जेक्ट पर जो है आपके वो ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं। ओके, ठीक है ना। अगर वो आपके जो है ड्रॉपलेट्स, अगर आप जैसे भी आपने कहा कि जो है खाने पीने के बर्तन हैं, आपके टॉवल्स हैं, आपके घर के बाकी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, तो उन सब पर जो है उसकी मौजूदगी कितनी देर तक है ये फिर डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे, और फिर ये कि उसकी जो है वो क्या है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, इस पर भी जो है ये चीज़ डिपेंडेबल होती है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो टीबी के जो फ़र्द होते हैं, टीबी अगर एक घर में खुदा न खास्ता कोई टीबी का मरीज़ है तो उसके लाजमी तौर पर जो है खाने पीने के बर्तन अलग होने चाहिए, उसका टॉवल अलग होना चाहिए, और जितने भी उसकी जो है उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जिस पे हमें शुबा हो कि इसमें जो है इसके ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे, तो वो हम अलग करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको तो पता भी नहीं होता है कि उनको टीबी हो गई है, लेकिन सिम्टम्स जो बेसिक आपने बताया कि बुखार भी हो सकता है, थकावट भी हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको इजी ले लेते हैं कि हमने जो है काम ज़्यादा किया है इसलिए हमें थकावट हो रही है, बुखार हो रहा है, लेकिन इसे लाइट लेना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। और जी क्योंकि देखिए हर चीज़ का आजकल देखिए हम लोग जो है ना बहुत सारी बीमारियों को खुद ही अपने सेल्फली जो है उसको हम डायग्नोज कर लेते हैं और फिर खुद ही उसकी जो है ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर हम फिर उसके वाइस वर्सा ये करते हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड या बहुत सारी ऐसी बड़ी
بیماریوں کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں جو پھر آگے جا کر ہمارے لیے خطرناک اور پھر وہ لا علاج ہو جاتی ہیں. ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جس کو اگر آپ شروع میں ہی اس کو پراپر طریقے سے ڈائگنوز کر لیں اور پھر شروع میں ہی اس کی ٹریٹمنٹ اگر ہم اسٹارٹ کر دیں تو وہ آگے جا کر وہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے ٹی بی کو بہت زیادہ لائٹلی لیا, آپ نے اس کو جو ہے فوری طور پر ڈائگنوسس کے پروسیس نہیں آپ نے اس کو جو ہے کور کیا تو پھر وہ آگے جا کر لا علاج ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کی باقاعدہ اب میڈیسنس اویلیبل ہیں کہ آپ پہلے, لیکن سب سے پہلے اس میں یہی بات ہے کہ آپ کی ڈائگنوسس آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے, خود سے سیلف میڈیکیشن کے ذریعے یا وداؤٹ آپ نے ٹیسٹ کروائے بغیر, کیونکہ اب تو ٹی بی کے ٹیسٹ بھی ہر لیب میں, ہر لیبارٹری میں, ہر ہاسپٹلس میں ہو رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے اگر آپ کو یہ سمٹمز مل رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کے بلغم میں, آپ کے تھوک میں جو ہے آپ کو ایسا زرد رنگ فیل ہو رہا ہے یا بلیڈنگ اس میں آ رہی ہے, بہت زیادہ آپ کو جو ہے تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے, بخار ہے یا پھر مسلسل کھانسی ہے, تو پھر فوری طور پر جو ہے آپ سب سے پہلے ٹیسٹ کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو یہ سمٹمز جو ہیں وہ کیا خود بھی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے, یا اس کا علاج اگر مطلب ممکن تو ہے اگر علاج نہ کروائے کوئی اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس سمٹمز کا, تو کیا خود سے بیماری یہ ختم ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بیماری میں ابھی تک تو ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں یہ کہ آپ کو علاج کروانا لازمی ہے. اور یہ کہ اگر میں نے بھی کہا کہ اگر ابتدائی میں اس کی ڈائگنوسس ہو کر آپ اگر ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں گے, پراپر ٹریٹمنٹ ایسا, لیکن بہت سے ایسے میں نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کو ٹی بی ہے, انہوں نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دی, کہ ان کو جو ہے ٹی بی ڈائگنوز ہو گئی, انہوں نے ٹی بی کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دی, ان کو کچھ انہیں افاقہ ہوا, کچھ انہوں نے اپنی طبیعت بہتر محسوس کی, انہوں نے دوائیاں وہیں پر اسٹاپ کر دی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر ان کو دوبارہ سے وہ ٹی بی اوپر آ جاتی ہے, پھر دوبارہ سے ان کو وہ مرض شروع ہو جاتا ہے. آپ کو جو ہے جو آپ کے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو اس کی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ہر چیز کا نا, ہر دوائی کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے سے اتنے دن تک یا اتنے مہینے, کیونکہ ٹی بی کا جو آپ کی پوری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پوری آپ کی جو ہے منتھلی وائز ہوتی ہے. ٹی بی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ایک دن میں یا 2 دن میں وہ ختم ہو جائے گی, اس کا پورا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اسی لحاظ سے آپ کو ڈاکٹرز جو ہے دوائی پرسکرائب کرتے ہیں. تو ہمیں جب اگر کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے تو اس کو اسی لحاظ سے ہی پھر دوائیں استعمال کرنی چاہیے. اگر وہ بیچ میں وہ دوائیاں اسٹاپ کر دے گا تو پھر اس کی بیماری دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے گی اور پھر وہ دوبارہ سے وہ خطرناک ہو سکتی ہے, یعنی کہ مزید خطرے کی طرف وہ جا سکتی ہیں. صحیح. تو ویورز آپ نے یہ سنا, ڈاکٹر سید صدف صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ بالکل بھی اس کو لائٹ نہ لیں, اور छाकाणि त अगरि असां लाइट वठंदासीं इनखे त असांजी ज़िंदगी खे ख़तरो थी सघे थो. ऐं ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे. मां हर इहा ॻाल्हि रिपीट कंदी आहियां, छाकाणि त हीअ ज़िंदगी असांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो ही मिली आहे. अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि खाने पीने में हम कोई एहतियात नहीं करते हैं. अगर जंक फूड बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने अगर बर्गर पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो और खुदा न ख्वास्ता ये टीबी की बीमारी में मैं मुब्तला हो जाऊं तो वो चीज़ें देख के मैं रह नहीं पाऊंगी. तो स्पेशली खाना क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, टीबी के जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से एहतियात करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी हमें ज़रा सा बताएं. دیکھیں ٹی بی کے جو مریض ہوتے ہیں نا ان کو بیسکلی ہلکی پھلکی اور سادہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے. پروٹین والی ڈائٹ لیں, پروٹین والی ڈائٹ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی. لیکن پروٹین والی ڈائٹ میں اب یہ نہیں کہ وہ بھنا ہوا گوشت استعمال کر رہے ہیں, بہت زیادہ جو ہے چربی یا پھر چکنائی والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. سادہ اور ہلکی پھلکی ڈائٹ کے جو ہے سوپ کا زیادہ استعمال کریں, فروٹس کا زیادہ استعمال کریں, کیونکہ دیکھیں وہ چاہے ٹی بی ہو چاہے کوئی بھی انفیکشس ہمارے پاس وہ ڈیزیز ہو, کوئی بھی جو اس طرح کی بیماری ہو, سب میں جو ہے آپ کا امیون سسٹم وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اگر آپ ہیلدی ہر بیماری میں آپ کو ہیلدی ڈائٹ استعمال کرنی ہے. ہیلدی سے مراد یہ کہ سادہ ہلکی پھلکی لیکن ہیلدی ہو, ایسی ہو کہ آپ اس میں فروٹس استعمال کریں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, میٹ ہیں, بینس ہیں, ہر چیز کا استعمال کریں, لیکن ایک ماڈریٹ, ایک معتدل انداز میں. صحیح. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ ساری چیزیں بالکل ایک ساتھ ساری چیزیں بھی. اور جنک فوڈ کا استعمال تو ہمیں ٹی بی کے علاوہ بھی کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے. جنک فوڈس ہیں جو ہمارے پاس, لیکن آج کل آپ دیکھیں عادت پڑ گئی ہے ڈاکٹر صاحب لوگوں کو, اور وہ کولڈ ڈرنکس اتنی زیادہ, چھوٹے بچوں کو تو خاص کر چھوٹے بچوں کو تو جو ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ جو ہے کولڈ ڈرنک چاہیے اور یہ جنک فوڈس چاہیے, اور یہی سب جو ہے نا جو آج کل اتنی ساری مختلف بچوں کو بھی اوبیسٹی
کہ جو ہے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, بچوں کو بھی مختلف دل کی بیماریاں, مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں, تو یہ سب بیماریوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم جو ہے ایک ہیلدی ڈائٹ استعمال نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر پیرنٹس جو ہے خود زیادہ کیئر کرتے ہیں اور ان چیزوں سے دور رہتے ہیں تو بچوں کو بھی عادت نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ کیئر پیرنٹس کو بھی زیادہ کرنی چاہیے. بالکل. یہ تو دیکھیں نا, ہر انسان, ہر بچہ جو ہے نا اپنے گھر سے سیکھتا ہے. بالکل. گھر آپ کا جو ہے سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ آپ کا گھر ہوتا ہے. جو چیز آپ کو آپ کے پیرنٹس, آپ کے گھر والے سکھائیں گے, جیسی آپ کو گھر میں ٹریننگ ملے گی, وہ چاہے آپ کی روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے ہو, چاہے آپ کی ایک آپ کی جو ہے وہ کیا کہیں جسے ڈائٹ ایکٹیویٹی کے لحاظ سے ہو. صحیح نا. تو اگر ہم گھر میں بچوں کو شروع سے ہی یہ تربیت دیں کہ وہ گھر میں ہی کے ہی بنے ہوئے کھانے, سب سے پہلی بات گھر کے بنے ہوئے کھانے اور گھر میں ہی ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں. گھر میں ہی اگر ان کو جو ہے وہ ہے کہ وہ ان کو پیزا کھانا ہے, برگر کھانا ہے, تو ہم گھر میں ہی ان کو وہ چیز بنا کر دے سکتے ہیں, جو باہر کے مقابلے میں آپ کو وہ کم وہ ہوگا کہ جو ہے انہیلدی. اور یہ کہ باہر تو دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ ڈرٹ, کیونکہ آج کل ہمارے باہر جو ہے پولوشن بھی بہت زیادہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, ڈرٹ ہے, ڈفرینٹ جو ہے بہت زیادہ پولوشن ہے. بہت بڑا واقعہ بھی پیش آیا تھا. میں جو ہے کلیئرلی اس ریسٹورینٹ کا نام تو نہیں لوں گی, لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ کتنے عرصہ پرانے وہ لوگ گوشت کا استعمال کر رہے تھے. تو یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بیماری کا جنم ہوتا ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ اگر بچے عادی ہو گئے تو آپ ان کو اپنے گھر پہ بنا کے دیں, کیونکہ دیکھیں نا یہ سب بیماریاں جیسے جتنی بھی انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں نا, زیادہ تر آپ کے جو ہے ان ہائیجینک فوڈ, بالکل, اور آپ کا ان ہائیجینک انوائرمنٹ. جیسے ہم ٹی بی کی بات کریں تو ٹی بی بھی دیکھیں ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو لوگ ایک انہیلدی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, جو لوگ بہت زیادہ گھٹے ہوئے انوائرمنٹ میں, ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر صاف ہوا ان کو جو ہے میسر نہیں ہوتی, بہت زیادہ گھٹن زیادہ ماحول ہوتا ہے, وہ لوگ جو ہے ٹی بی کے مرض کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, جن کے پاس ایک صاف آب و ہوا میسر ہوتی ہے, جو ایک بالکل ہیلدی ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں. تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی بی کا مرض جو ہے نا زیادہ تر ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں ایک ہی گھر میں بہت زیادہ افراد موجود ہوتے ہیں, بہت زیادہ بہت زیادہ ایک گھٹن والا ماحول ہوتا ہے نا, تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو ٹی بی کا مرض زیادہ ہوتا ہے. پھر وہاں پر ایک فرد سے دوسرے فرد میں جو ہے پھیلنے کی شرح بھی جو ہے زیادہ ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے, اور ہماری جو فیملیز ہیں اگر ہم اپر سندھ میں یا جہاں بھی دیکھ لیں تو بہت ساری فیملیز آج بھی جو ہیں ایک ساتھ رہ رہی ہیں. تو اس وقت وہ کس طرح سے پریکاشنز کریں وہ بھی تھوڑا آپ گائیڈ کریں. اس میں یہ کہ ہمارے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جو ہے کچھ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے ان کا اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ہیں, اپنے وہ اس میں کلوز انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, تو وہاں پر وہ صفائی ستھرائی کا لازمی خیال کریں, صفائی ستھرائی کا خیال کریں, اور پھر یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے کلین رکھیں, اور یہ کہ ان کے پاس صاف ہوا کی جو ہے آمدرفت ان کے پاس ہو, کہ بہت زیادہ جو ہے کھڑکیوں کو جو ہے بند نہ کریں, کھڑکیوں کو جو ہے, اور سب سے بڑی چیز آپ کے پاس سورج کی روشنی سے استفادہ حاصل کرنے کا پراپر انتظام ہو. بالکل, وہ تو قدرت کی طرف سے ہے, اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں لگنے, بالکل فری آف کاسٹ آپ کو مل جاتی ہے. ہاں, اور بہت صرف ٹی بی کے علاوہ ابھی جیسے ہم کووڈ-19 کے حوالے سے اور بھی ایسی بہت ساری انفیکشس ڈیزیز ہیں جن کا علاج صرف یہ کہ آپ صاف ستھری ہوا اور یہ کہ آپ وائٹامن ڈی حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی نیچرل سورج سے. تو اگر آپ کی باڈی میں امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, آپ کی باڈی اندر سے اسٹرانگ ہوگی, تو کوئی بھی ڈیزیز آپ پر جو ہے اٹیک نہیں کرے گی. تو وہ پھر ٹی بی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی بیماری ہو, بس یہ نا کہ آپ کی جو امیونٹی ہے, جو آپ کا قوت مدافعت کا نظام ہوتا ہے, وہ صرف آپ کی ہیلدی ڈائٹ پر میٹر نہیں ہو رہا تھا نا, اس کے لیے آپ کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی, آپ کی ایک جو ہیلدی انوائرمنٹ, ڈاکٹر صاحبہ یہاں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے, یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے. ویورز پروگرام میں اساں تعاون کیا ہے ٹینک رمضان, جیز بینک گولڈ فائنانس, ٹپال میزبان سو جمالو, 4ME سوپ, لائف بوائے شیمپو, انسری ریزیڈنسی, ان کا علاوہ مہران بچت پیک پارا اساں پروگرام میں تعاون کیا ویو ہے. جلدی اساں کے ایک بی پرسنالٹی ॿियो ڈاکٹر صاحب اساں کے جوائن कंदा, जिन खां बि खोड़ सारा सवाल मां तयारु कया आहिनि उहे पुछंदासीं. तव्हांजी इंफॉर्मेशन में अगरि इज़ाफ़ो थिए पियो त असांखे बि ज़रूरु फीडबैक ॾींदा हलिजो. नंढड़ी साई खां पोइ अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियूं था.
जी विवर्स ॻाल्हि हले पई टीबी जी ऐं इन हवाले सां जेके डॉक्टर सदफ़ साहिबा आहिनि उन्हनि सां खोड़ सारी कचेरी थी। हिन वक़्तु हिकु ॿी पर्सनैलिटी असांखे जॉइन कयो आहे, पाण डॉक्टर आहिनि, डॉक्टर अब्दुल समद भट्टी साहब, जेके MBBS FCPS इंटरनल मेडिसिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी खां असांखे हिते जॉइन कयो अथनि स्टूडियो में। सर सभ खां पहिरीं वेलकम कयां थी मां। ऐं छाकाणि त ही हिकु अहिड़ी बीमारी आहे जंहिंजे हवाले सां काफ़ी सारे माण्हुनि खे अवेयरनेस बि नाहे हूंदी, त अॼोके ॾिहाड़ी खे डिज़ाइन करण जो मक़सदु बि इहो ई आहे त असां वधि खां वधि एजुकेशन ॾेई सघूं। त पाण किथे बीठा आहियूं, पाकिस्तान जेको आहे उहो किथे बीठो आहे हिन बीमारी में, इलाज केतिरो असां इन में मुमकिन करे सघिया आहियूं, त थोरो इहो असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो। ऐं पाकिस्तान छाकाणि त ओवरऑल वर्ल्ड जी सिचुएशन मां जॾहिं पेश कई त 2018 में तक़रीबन जेको आहे 1 मिलियन माण्हू जेके आहिनि डायग्नोस थिया ऐं 1.5 मिलियन मौत जो कार्ड बणिया ओवरऑल वर्ल्ड में WHO जी जेका आहे रिसर्च मुताबिक़। पर हाणे जी सर्वे मुताबिक़ पंहिंजो पाकिस्तान, पाण किथे बीठा आहियूं, पंहिंजो मुल्क किथे बीठो आहे, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त महिरबानी तव्हांजी, तव्हां मौक़ो ॾिनो। जीअं त TB त असांजी क़ौमी बीमारी आहे, जीअं तव्हां ॼाणो था त असांजो जो मुल्क जो बानी क़ाइद मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह बि इन TB में ई असांखे विछड़िया हुआ। त इन में को शक न आहे त असां इन बीमारी में इन बीमारी अञा ताईं जान न छॾाए सघिया आहियूं। ऐं बजाए इन जे असां इन बीमारी में पंहिंजी क़ौम खे ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी जेका हिफ़ाज़त करे सघूं, असां इन खां जान छॾाइण जी कोशिशि कयूं पिया, पर अञा कामयाबु नथा थी सघूं। छो जो 2017-18 जी जेका रिसर्च हुई, छो 19 में असां लॻी वियासीं COVID-19 में, 20 बि उन में गुज़री वियो। त उन में बि असांजे मुल्क में, बल्कि असांजे सूबे सिंध में बि तमामु घणी तादाद में जेके आहिनि इन बीमारी में माण्हू मुब्तला हुआ। बावजूदि इन जे असांजे मुल्क में, असांजे सूबे में, असांजे शहरनि खां वठी ॻोठनि ताईं हिन जी दवायूं मुफ़्त में मौजूदु आहिनि ऐं हिन जी तशख़ीस करणु तमामु आसान आहे। बिल्कुलु। सो लेकिन इन खां पोइ बि जेको आहे माण्हुनि में इन जो शऊर पैदा करणु ऐं इन बीमारी जे जेके आहिनि काफ़ी अरसे देर ते रहण खां पोइ उन जे जेके मुज़र असरात असांजे जिस्म ते उन जे बारे में असांखे ख़बर न आहे छा थींदो। इन जे करे असां बि इन बीमारी खे हल्को सम्झी करे छॾे था ॾियूं, जिन जे करे पोइ ईअं थिए थो। लेकिन इहो ॾिठो वियो आहे त असांजी बावजूदि जे ॿारहाड़ी में तालीम जो रेशो घटि हुजण जे बि उते इहा बीमारी एतिरी न आहे जेतिरी शहरनि में आहे। जी हा, छो जो शहरनि में इन जा काफ़ी सारा वजूहात आहिनि। हिकु हिते पीअण जो पाणी आहे, ॿिया घरनि जी नंढड़ा घर आहिनि, सूरज जी रोशनी सही नमूने सां न मिलण जे करे। ऐं जीअं मां हाणे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कमु कयां, लाइफ जनरल हॉस्पिटल शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, जेको तमामु सुठे मौक़े ते ऐं सुठे मक़ाम ते महिल कमु करे पियो पंहिंजे कराची ऐं सूबा सिंध ऐं जेको आहे तक़रीबन पूरे मुल्क जे काफ़ी शहरनि खां माण्हू हुते इलाज लाइ अचनि था। त हुते असां वटि जेके मरीज़ अचनि था उहे अक्सर TB जा उहे मरीज़ आहिनि जेके दवा वठण खां पोइ लास्ट टू फॉलो थी वञनि था, या पंहिंजी इलाज जो मुकमिल नथा कनि, या उनखे ॼाण ई न आहे त मूंखे कहिड़ी बीमारी आहे। सो इन जे करे असांजो मतिलबु हुते अचण खां पोइ उन्हनि खे डायग्नोस थिए थो त उन्हनि खे इहा बीमारी आहे। जी हा, न हालांकि सिम्टम्स डॉक्टर साहिब असांखे ॿुधाया, डॉक्टर साहिब, त सिम्टम्स जेके आहिनि उहे असांखे थोरा तव्हां वरी रिपीट कंदा हलिजो, छो जो खोड़ सारे माण्हुनि में बि असांखे हाणे जॉइन कयो आहे जिन व्यूवर्स, उन्हनि जी जेको आहे इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ो थी वेंदो। त सिम्टम्स कहिड़ा आहिनि, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त डॉक्टर उन्हनि खे चेक कनि था, मरीज़ अचनि था, उन्हनि खे बाद में ख़बर पए थी त असां TB जा मरीज़ आहियूं। हाणे ॾिसो, शुरू खां इहा ई रिसर्च हुई ऐं इहो हिकिड़ो थीम हो त TB जेका आहे उहा सिर्फ़ु फिफड़नि खे मुतासिर करे थी ऐं प्राइमरी साइड फिफड़ ई आहिनि। लेकिन हाणे इहा ॻाल्हि चेंज थी चुकी आहे त TB जिस्म जे कंहिं बि आर्गन में प्राइमरी थी सघे थी। अॻु ईअं हूंदो त फिफड़नि मां थी करे पोइ पूरे जिस्म में फैलिजे थी, ईअं न आहे। हाणे हॾनि जी बि थी सघे थी, दिमाग़ जी बि थी सघे थी, पेट जी, आंड्रे जी, पेट जे अंदरि जेका तह आहे उनजी थी सघे थी। वरी फिफड़नि में बि जेके साह जो सिस्टम अलॻि आहे, जेके ॿाहिरि प्लूरियास जेके आहिनि उन में अलॻि थिए थी, त उन जा अलॻि अलॻि ई क़िस्म आहिनि। लेकिन इलाज ऐं दवायूं साॻियूं आहिनि। पोइ हुनजो जेको दौरान आहे दवा जो जेको अरसो आहे उहो तब्दील थी थो वञे। त इन जे करे असां वटि अक्सर जेके मरीज़ अचनि था लियारी जनरल हॉस्पिटल में, जेके हिन वक़्तु असां वटि
2000 खां वधीक मरीज़ रजिस्टर्ड आहिनि जेके दवा हले पई ऐं हज़ारनि जी तादाद में मरीज़ ठीक थी चुका आहिनि ठीक थी चुका हूंदा अल्हम्दुलिल्लाह जेके बिल्कुलु क्यूअर थी विया आहिनि ऐं हाणे ऑफ मेडिसिन आहिनि पंहिंजी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारनि पिया त मूं पंहिंजे जेके 6-7 सालनि जे अरसे में जेके मरीज़ ॾिठा आहिनि सही उन्हनि में काफ़ी माना 80 खां 90% उहे मरीज़ जेके फिफड़नि में पाणी भरिजण जे करे अचनि था सही या संदनि में पाणी भरिजी थो वञे। डॉक्टर साहब इते हिकिड़ो सवाल क्लिक करे पियो मूंखे छा लंग्स ख़राब थियण खां पोइ बि पॉसिबल आहे इहा बीमारी या लंग्स जो सही थियणु पॉसिबल आहे? जी आहे या अगरि असां अर्ली स्टेज में बीमारी डॉक्टर वटि पुॼी थो वञे मरीज़ ठीकु त पोइ त 100% क्यूरेबल आहे ओके त आम माण्हू वांगुरु माण्हू ठीक थी सघे थो बल्कि हुनजो एक्सरो बि जेको आहे कुझु अरसे खां बिल्कुलु नॉर्मल थी सघे थो सही लेकिन अगरि मरीज़ डॉक्टर साहब वटि या हॉस्पिटल में देरि सां पहुतो त उन में पोइ ॾिसबो त बीमारी केतिरे हद ताईं जिस्म खे मुतासिर कयो आहे मुतासिर कयो आहे त ओके उन खां पोइ ॾिसबो त लेकिन पोइ बि बीमारी जेका आहे उहा 100% ख़तमु थियण वारी आहे सही ऐं उन जा निशानात कुझु रहिजी वेंदा पोइ उन्हनि जो को बि इलाजु न आहे उहे रहंदा उहे जिस्म जे को बि उन हानिकार असरु न हूंदो हुननि जो सो इन जे करे जीअं हाणे असां वटि कई मरीज़ अहिड़ा अचनि था जो फिफड़नि में पाणी भरे अचे थो उन्हनि साह खणण में तकलीफ़ थिए थी साह खणण में तकलीफ़ थिए त जॾहिं इहा ई बीमारी फिफड़ में आहे त पोइ ॿिए खे लॻी सघे थी ओके लेकिन अगरि फिफड़ मां निकिरी करे पासे में पाणी जी शक्ल में अख़्तियार करे थी त पोइ ॿिए में लॻण जा चांसिस बिल्कुलु घटि थी था वञनि सही अच्छा डॉक्टर साहब मां डॉक्टर सदफ साहिबा जी तरफ़ ईंदमि छाकाणि त इन्हनि पहिरियां इहा ॻाल्हि कई त हिकिड़ो इन्फेक्शन थिए थो ऐं हिकिड़ी बीमारी थिए थी त इहो सवाल मां तव्हां खां बि ज़रूरु ॼाणणु चाहींदमि डॉक्टर साहिबा क्योंकि आप स्पेशली इन्फेक्शन कंट्रोलर हैं और मैनेज करिए इन सारी चीज़ों को तो इन्फेक्शन कंट्रोल कितने अरसे में हो जाता है अगर कोई इन्फेक्टेड है इस बीमारी से? देखिए इसमें फिर वही बात है कि जो है अगर आप दवाइयाँ सही से इस्तेमाल कर रहे हैं ओके आपने फर्स्टली उसका जो है पहले डायग्नोसिस हो गई सही उसके बाद जब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है ठीक है ना तो उसमें कम से कम आपको 1 साल तक का अरसा तो दरकार होता है ओके ठीक है ना इतना टाइम तो आपको लगे लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अब आपके टीब के इन्फेक्शन की इंटेंसिटी क्या है आपके का जो इन्फेक्शन है वो किस स्टेज तक पहुँच गया है अगर वो इनिशियल स्टेजेस में तो वो आपको जो है इफेक्टिवली तौर पर आपको मेडिसिन भी के ज़रिए और फिर जो भी आपको आपके डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है लेकिन इसमें भी ये कि आपको तमाम चीज़ों को फिर मद्देनज़र रखना होता है कि क्योंकि देखिए टीबी जो है ना बहुत ज़्यादा जो लोग तनाव में होते हैं सही उनमें भी बहुत ज़्यादा उसमें उन लोगों में भी असरअंदाज होती है जो लोग हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं टेंशन में रहते हैं और जो वो जैसे मैंने अभी कहा जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे घुटे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको दवाइयों के साथ साथ उन सब अवामिल को भी मद्देनज़र रखना होता है कि इस बीमारी से जो है जान वो करने के लिए डिप्रेशन से जितना हो सकता है हम खुद को दूर रखें बिल्कुल डिप्रेशन से भी और अपने आप को एक ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट में लेकर आए बिल्कुल अगर आपको लेकिन इसमें ना मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगी कि जैसे हमारे यहाँ जो है ना 2 टाइप्स की जो है टीबी होती है ठीक है ना एक लेटेंट टीबी होती है और एक एक्टिव टीबी होती है लेटेंट टीबी वो होती है जिसे हम मख्फी टीबी कहते हैं सही ना कि जो हमें अगर वो बीमारी वो टीबी अगर की बीमारी हमें है तो हमारे पास कोई साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे लेकिन हम उससे दूसरे लोगों को अपने खांसने से छींकने से अपने ड्रॉपलेट से इफेक्ट कर सकते हैं ठीक फिर उसमें क्योंकि हमारे पास उसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे तो हम उसको जो है अपने अंदर उसको फील नहीं कर सकते पेशेंट उस बैक्टीरिया को ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम को जो है अपने अंदर कैरी कर रहा है लेकिन वो खुद उससे इन्फेक्टेड नहीं हो रहा लेकिन वो दूसरे लोगों को उससे मुतासिर कर रहा है लेकिन अगर आपके पास एक्टिव टीबी है तो ये कि आपके पास उसके साइन एंड सिम्टम्स ही होंगे जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब आपके पास एक्टिव टीबी में होंगे और वो उसको जो है ज़्यादा खतरात होते हैं कि वो ज़्यादा लोगों को जो है फिर वो इफेक्ट कर सकती है तो इसलिए प्रिकॉशन ज़रूरी है। अच्छा क्योंकि स्टेजेस की हमने बात हो रही थी तो मैंने कहा कि स्टेजेस जे हवाले से डॉक्टर साहब अगर असांखे ॿुधायो छाकाणि त पहिरीं स्टेज कहिड़ी हूंदी आहे उन में कहिड़ा सिम्टम्स हूंदा आहिनि या वरी ॿी स्टेज ते मरीज़ पहुचे थो या थर्ड स्टेज ते जॾहिं पहुचे थो उते बि इलाजु मुमकिन आहे कंडीशन छा हूंदी आहे मरीज़ जी उन वक़्तु हॉस्पिटलाइज़ हूंदो आहे छा हूंदो आहे उहा सिचुएशन प्लीज़ असांखे ॿुधाइजो। हाणे ॾिसो जीअं डॉक्टर सदफ़ फरमायो त बीमारी जेका आहिनि मुख़्तलिफ़ स्टेज आहिनि पर 3 खां अगरि वधीक 4-5 चइजनि तॾहिं बि ग़लति न थींदो ओके हाणे असां वटि जीअं मरीज़ अचे थो कुझु मरीज़ आहिनि जेके लेटेंट टीबी मैडम चयो त लेटेंट टीबी असां पाकिस्तान में इलाजु न कंदा आहियूं
इन जे करे जो असां वटि हर माण्हू खे इन जरासीम सां वास्तो पियो आहे, माना असांजो क़ौमी धारियल आहे जंहिं खणी चइजे। त इन जे करे अगरि असां में लेटेंट टीबी जे अगरि जेका टेस्ट करायूं पॉज़िटिव अचे असां इलाजु न कंदा आहियूं। इलाज न कंदा उन खां पोइ जेको ॿियो स्टेज आहे उन में सिम्टम उनजी वजह डॉक्टर साहब? उनजी वजह आहे जो असांजे मुल्क में असांजी फ़िज़ा में इहो जरासीम आम ऐं जाम आहे। सही। त हिकु दफ़ो अगरि टेस्ट कराइण जे बावजूदि पॉज़िटिव अची त असां वधीक टेस्ट कराए ॾिसंदासीं हिन खे वाक़ई टीबी आहे या जेको हिन खे माहौल मां थोरो मिड़ेई जीअं तबरुक खणी चइजे सही या खणी थोरो असरु उहो थियो आहे। सही। पोइ डॉक्टर साहब उते छॾे ॾियण बि त सही न आहे छाकाणि त इन्फेक्शन उहो बसि उन खे अगरि टीबी मज़ीद न आहे त पोइ उनखे छॾे ॾिबो। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो इलाजु न कबो। पर अगरि इहो ई इहा ई टेस्ट अगरि अहिड़े मुल्क में जीअं डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि उते अगरि पॉज़िटिव अचे उते इलाजु थींदो। 6 महीननि लाइ आइसोनियाज़िक टैबलेट शुरू कई वेंदी, पोइ 6 महीने खां वरी इहा टेस्ट रिपीट कराइबी। पोइ असां वटि जेको मरीज़ जो स्टेज आहे जीअं फस्ट स्टेज में ईंदा आहिनि खांसी सां, वेट लॉस सां गॾु ईंदा आहिनि ऐं बुख न लॻणु, सॼो ॾींहुं जिस्म में सूर जो हुजणु, ख़ुशी तो राति जो पसीने जो अचणु, त इहे असां वटि शुरू में मरीज़। पर इन खे असां लिफ्ट न कराईंदा आहियूं। इवन शहरनि में बि ॻोठनि में बि अमड़ चवंदी आहे पुटु ठीकु आहे खीर पी छॾ ऐं जेको आहे ताक़त जूं दवायूं या इवन असांजे जेके मेडिकल फील्ड में बि छो जो टीबी डायग्नोज़ करणु तमामु आसानु आहे पर हुनजो इलाजु करणु तमामु थोरो टिपिकल आहे। उन लाइ तव्हां वटि अहिड़े डॉक्टर जी जेका आहे खे मुआइनो करणु ऐं डॉक्टर खां मशवरो वठणु ज़रूरी जेको इन शइ खे वधि खां वधि ॼाणे। उन लाइ असां वटि सिंध हुकूमत जे पारां ऐं हुकूमत पाकिस्तान जे पारां हर जॻह ते WHO जा कई प्रोग्राम हलनि था। असां वटि गली गली में अहिड़ा डॉक्टर मौजूदु आहिनि जेके इन बीमारी ते ई माहिर आहिनि, महारत हासिलु आहे उन्हनि खे। सो पोइ जीअं हाणे फिफड़नि जी टीबी आहे, अॻे हूंदो त बाबा इन जी दवा 1 साल हलंदी, लेकिन हाणे उनखे घटाए करे 6 महीना कई वई आहे। 6 महीना। अच्छा डॉक्टर साहब, छाकाणि त इलाही माण्हू फाइनेंशियली अफोर्ड न करे सघंदा आहिनि त टीबी जो मर्ज़ मुफ़्त इलाजु थिए पियो थो पाण वटि पाकिस्तान में या वरी सिर्फ़ु प्राइवेट ई कराए सघूं? न, इन जो इलाज टेस्टूं बल्कि इन इलाज सां गॾु जेके खाधो खुराक उहे सभु हुकूमत जे पारां मुफ़्त में फ़राहम थियनि थियूं। इवन शहर खां वठी ॻोठ ताईं, ॻोठ खां वठी शहर ताईं। पर इहो त माण्हू सही जॻह ते सिर्फ़ु पुॼी वञनि। सो इन जे करे पोइ हाणे जीअं इन में हिकिड़ो हूंदो आहे MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। अॻु इहो हूंदो त हुनजी दवा जेका आहे 2 साल खां 2.5 साल ताईं हलंदी हुई, लेकिन उनखे हाणे 2017 में जेका रिसर्च थी पोइ जो असांजो PTB आहे, पाकिस्तान टीबी खां जेका अलॻि पंहिंजी हिकिड़ी काउंसिल आहे पाकिस्तान में, सोसाइटी आहे, उन हिकिड़ी ठाही त असां पाकिस्तान में साल जो ट्रायल ॾेई करे पोइ चेक कंदासीं त टीबी ख़तमु थी वई त पोइ दवा बंदि करे छॾींदा आहियूं। 18 महीने खां वधीक असां दवा नथा हलाए सघूं। सही। माना एॾी दुनिया तरक़ी करे वई आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां उन तरक़ी में दुनिया सां गॾु कुल्हो मिलाइण जी कोशिशि कयूं पिया ऐं काफ़ी हद ताईं असां हिन में जेको आहे पंहिंजी शयूं हासिलु करे चुका आहियूं। सही, ॾाढो सुठो। अच्छा, पाण स्टेजिस जी ॻाल्हि कई, मरीज़ जे हवाले सां बि तव्हां असांखे ॿुधायो, पर कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि अञा बि जेके आहिनि माण्हू सोचनि पिया था त असां ख़बर न आहे इलाजु मुमकिन आहे या न, पर जेके कैंप लॻंदा आहिनि स्पेशली माण्हू ओॾां वञणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि। छा हॉस्पिटल्स में ईज़ीली वञी सघिजे थो? कहिड़ी बि हॉस्पिटल में जीअं गवर्नमेंट जी हॉस्पिटल्स ठहियल आहिनि उते अवेलेबल हूंदो आहे? छाकाणि त पाण वटि जेका सिचुएशन आहे उहा असां सभिनि जे साम्हूं आहे। हिकु मरीज़ खे उहो अरिसो ॾिनो वेंदो आहे 3 महीननि खां पोइ अचु, 2 महीननि खां पोइ अचे, जेसि ताईं हुनजी स्टेज ख़ुदा न ख़्वास्ता हू 3rd लेवल खां बि पार करे थो वञे त इहो इलाही नुक़सानदा आहे। त तव्हां जेको आहे कीअं रिकमेंड कंदो मरीज़ खे त उहे अगरि सिम्टम्स पाण ई उनखे अहिड़े क़िस्म जा ज़ाहिर थियनि था त घर वेठे कहिड़े क़िस्म जा एहतियात करे? हाणे जीअं तव्हां फरमायो त मरीज़ खे 3 महीननि ते 4 महीने टाइम ॾिनो, पर टीबी जे लाइ ईअं बिल्कुलु बि न आहे। टीबी जे लाइ त कई गाॾियूं बल्कि जेके मज़दा टाइप एक्सरे छापा पिया था ॾिसंदा हूंदो, हर गली गली में अस्पताल जे ॿाहिरि गेट ते बीठा सॼे एक्सरा था कनि। एक्सरे थी थो वञे, उन खां पोइ जेको आहे टीबी खे डायग्नोज करण में 2 खां 3 कलाक लॻंदा आहिनि। AFB सीमियर कबो आहे बलगम में या जेको बि असां फ्लूइड हूंदो आहे उन में डाई विझंदा आहियूं, ज़ाहिर थी वियो उन में दवा शुरू करे सघंदा आहियूं। जीन एक्सपर्ट असां जेके PCR करंदा आहियूं उन में 1.5 खां 2 कलाक लॻंदा आहिनि। बाबा हिकिड़ी मशीन में लॻाए ख़बर पइजी वेंदी आहे। ॿियो हिकिड़ो हूंदो आहे AFBCS जेको 1.5 महीने 6 हफ़्तनि ताईं असां ॾिसंदा आहियूं। उन में टीबी जेका आहे असल में इन जो जेको माइकोबैक्टरम आहे इन जा पाण में 12 भेण भाउ आहिनि, कहिड़ी सिंधी में मां सम्झायूं, जेके इन ॿियूं जिन्सूं आहिनि, ॿियूं स्पीशीज़ आहिनि। हिकिड़ो पाण माइकोबैक्टरम ट्यूबरकुलोसिस चऊं था,
इन करे लेपराए हूंदो आहे हिकिड़ो, ॿिया ॿिनि जा कई मेक आहे, इन जा कई जेके आहिनि इन जा टाइप्स आहिनि। पोइ जेको पाण AFBCS कराईंदा आहियूं उन्हनि जी ख़बर पइजी वेंदी आहे, उनजो बि ट्रीटमेंट प्लान चेंज थी वेंदो आहे। लेकिन जेको TB जी दवा बिल्कुलु मुफ़्त आहे ऐं हर जॻह ते बिल्कुलु आसानी सां मौजूदु आहे। TB जे मरीज़ खे ईअं ख्वार थियणो रुलणो न पवंदो आहे त बाबा तूं 6 महीने खां पोइ अचां, साल खां पोइ अचां, बल्कि इन खां बि हिकिड़े आसान ते अगरि कंहिंखे पेट में सीने में पाणी आहे, कंहिं जॉइंट में फ्लूइड भरिजी वियो आहे त असां हलंदे हलंदे वार्ड में विहारे करे अल्ट्रासाउंड जी मशीन जे ज़रिए या अहिड़ा एक्सपर्टीज आहिनि इन मां पाण थोरो परकस करे ॾिसण भई त पाणी आहे सुई हणी कढी 10 cc जेको आहे कलाक ॿिनि में टेस्ट अची वेंदी आहे, उनजी दवा शुरू करे छॾींदा आहियूं। तमामु सुठो। ऐं छाकाणि त सेल्फ मेडिकेशन खे इलाही माण्हू जेको आहे इम्पोर्टेंस ॾींदा आहिनि। त डॉक्टर साहिबा ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है, लेकिन लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है हमारे इर्द गिर्द के माहौल में अगर किसी को थोड़ा सा पेन होता है तो पेन किलर खा लेते हैं। ये कितना नुकसानदेह है लोगों के लिए, ये प्लीज़ आप हमें बताएं। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे पास XDR, MDR ये क्यों आजकल इतने ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। TB में भी, टाइफाइड में आप ले लें, टाइफाइड, XDR, MDR हम सुन रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोगों में जो है ये सेल्फ मेडिकेशन का जो है रुझान आम होता जा रहा है कि अब जब उनको कोई जो उनको असल बीमारी होती है, क्योंकि देखिए हमारे पास अगर हम फ्लू की बात करते हैं, ठीक है ना, तो फ्लू में आपको सिर्फ लाजमी नहीं है कि आपको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फ्लू हो, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको कोई इसमें एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है। तो फ्लू की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि फ्लू हुआ है तो हम कोई ना कोई एंटीबायोटिक फ़ौरन हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी हम डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं करवाते हैं। एक तो ये कि हम लोग जो आम हमारी जो पब्लिक है, जो हम लोग भी ऐसा कर रहे होते हैं, और फिर डॉक्टर हजरात को भी ये चीज़ बिल्कुल लाजमी और मैंडेटरी करनी चाहिए कि विदाउट टेस्ट, अब जैसे TB की बात है या कोई भी हम पास ऐसा कोई इन्फेक्शन आ रहा है, कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे पास आ रही है, तो विदाउट टेस्टिंग आप पहले सैंपल को लेबॉर्ट्री भेजिए, फिर वहाँ से चेक होकर वो आए कि वो आया कि वो वायरल इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, वो किस टाइप का इन्फेक्शन है। और फिर अगर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है एंटीबायोटिक आप उसको जो है प्रिस्क्राइब करें, फिर देखें कि वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि जब हम सिर्फ एंटीबायोटिक इस्तेमाल चाहे उसको हम करते रहें, वो चाहे हम खुद से करें, चाहे हम जो है बिना किसी टेस्ट के बस सिर्फ डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमें एक लिस्ट भर के एंटीबायोटिक्स का दे दें, तो जब हमारे पास जब असल बीमारी में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, जब हम मुब्तला होते हैं ना, तो फिर वो दवाइयाँ फिर हम पर असरअंदाज नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग जरा सी भी उसमें जो है कोई भी बिल्कुल हो चुकी होती है। बिल्कुल, तो फिर उसके बाद फिर आपके पास ये XDR, MDR के तमाम इश्यूज आ रहे होते हैं कि कोई भी फिर दवाई आप पर असरअंदाज नहीं होती है। तो सेल्फ मेडिकेशन का जो है रुझान वो हमें बिल्कुल ही जो है अपने घरों से ख़त्म कर देना चाहिए कि बिना टेस्ट बात कही आपने, हम कोई भी ना करें। हम लोग स्टार्ट लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक की तरफ चलते हैं और भी बहुत कुछ हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो व्यूअर्स असा प्रोग्राम में तावन कयो आहे टेंग रमदान, जेस बैंक, गोल्ड फाइनेंस, टपाल मेज़बान सो जमालो, 4ME सोप, उन खां अलावा लाइफ बॉय शैम्पू, अंसरी रेजिडेंसी मेहरान बचत पैक पारां असां प्रोग्राम में तावन कयो वियो आहे। अॼु 24 मार्च जेको आलमी ॾियारो आहे TB जे हवाले सां कोशिशि आहे असां वधि खां वधि तव्हांखे इन्फॉर्मेशन पहुचाए सघूं। तव्हां वटि बि अहिड़े कंहिं क़िस्म जी इन्फॉर्मेशन आहे सिम्टम्स जे हवाले सां, प्रिकॉशन्स जे हवाले सां, या इर्द गिर्द तव्हांजे माहौल में अगरि TB जा मरीज़ आहिनि, उन्हनि पंहिंजो पाण खे कहिड़े नमूने सां इन बीमारी खां बचायो आहे, त तव्हां फीडबैक ज़रिए असांखे ॿुधाए सघो था। हलूं था नंढड़ी साई जी तरफ़। डोंट गो अवे, स्टे विद अस। साईअ खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार कयूं था। ॻाल्हि हले पई TB जे हवाले सां। इन हवाले सां तमामु बहितरीनु इन्फॉर्मेशन असांखे मिली चुकी आहे ऐं डॉक्टर साहब असां गॾु मौजूदु आहिनि, डॉक्टर सदर साहिब आहिनि। पर डॉक्टर साहब तव्हांजी तरफ़ ईंदमि, ब्रेक में पाण ज़िक्र करे रहिया हुआसीं त जेका इन्फेक्शन थिए थो या जेका बीमारी थिए थी, असांजा जेके आम माण्हू असां बल्कि पाण बि असां सभु मिली करे त असांजी ज़िम्मेवारी थिए थी त सिम्टम्स अगरि शो थियनि था त असां फ़ौरन वञूं ऐं फ़ौरन विज़िट कजे डॉक्टर वटि। पर असां उनखे
ॾाढो लाइट वठंदा आहियूं। तव्हां ॻाल्हि कई हुई ब्रेक में त खोड़ सारा माण्हू सम्झंदा आहिनि त अगरि असां खीर खे बॉइल करे पीअंदासीं त उन में ओतिरी ताक़त न बचंदी। त इते सवाल इहो थो पैदा थिए त ख़ुदा न ख़्वास्ता अगरि उन मेंह खे TB आहे ऐं उन जो खीर असां बग़ैर बॉइल करण जे पी था वञूं त प्लीज़ इन हवाले सां असांखे गाइड कजो। जी जीअं अहिड़ो जानवर जेको इन्फेक्टेड आहे, छो जो जानवरनि जी इन्फेक्शन जी पाण खे अक्सर औकात ख़बर न हूंदी आहे। बिल्कुलु। त बकरी आहे, ढगी आहे, मेंह आहे, त उनजो खीर हूं ते बि माना खीर खे बॉइल करे पोइ इस्तेमालु करणु खपे। असांजो कॉन्सेप्ट आहे त बाबा असां जेको आहे खीर गरम कंदासीं उन में असुलु ताक़त ख़तमु थी वेंदी, ईअं हरगिज़ बि न आहे। त उन खे असां बॉइल करे पीअण सां इन्फेक्शन खां, TB खां, इन्हनि काफ़ी शयुनि खां बची सघूं था। हिकिड़ी अहम ॻाल्हि इहा मां शेयर करणु चाहींदुमि, जीअं अॻे ईअं हूंदो हो त बाबा जीअं माण्हू खे TB थी उनजो थांव अलॻि करे छॾींदा हुआसीं, ॻोठनि में ईअं हूंदो हो, या ॿार वॾो आहे त माउ थञनि ते खीर न पीआरींदी। अहिड़ो को बि कॉन्सेप्ट असांजी मेडिकल में न आहे। उहो असांजे करे खाए पी सघे थो, बसि अगरि हुनखे फिफड़नि जी TB आहे त फैलिजण जो वधीक अंदेशो आहे। थांव बि न, मास्क इस्तेमालु कनि, ऐं बाक़ी आइसोलेशन थोरी घणी। बाक़ी माउ जी खीर मां इहा फैलिजण जो को बि ज़रियो असां अञा ताईं रिसोर्स न मिलियो आहे त जिन करे इहा थी सघे थी। सो इन जे करे इहो बि हिकिड़ो माना हौसलो आहे असांजी क़ौम जे लाइ, असांजे आवाम जे लाइ। जीअं बाबा अगरि कंहिंखे ख़ुदि न TB थी त असां उनखे एॾी नज़र सां न ॾिसो उनखे TB थी वई आहे। ऐं TB थियण में मरीज़ जो को बि ॾोह न आहे। बीमारी आहे कंहिंखे बि कंहिं महिल लॻी सघे थी। असां जंहिंखे TB त उनखे किरियल नज़र ॾिसो हिनखे TB आहे, हिन खां परे करे, ईअं न आहे। कॾहिं भत ते कंहिं शादी में अचे असां वेहण न छॾियूं, न ईअं न आहे। उहो असांजो भाउ आहे, असांजो दोस्त आहे, उहो दवा इस्तेमालु करे थो। हिकिड़ी ॿी अहम ॻाल्हि जीअं मां तव्हां ब्रेक में थोरो प्रिकॉशन ज़रूरी आहिनि, छाकाणि त ज़ाहिर आहे हीअ अहिड़ी बीमारी आहे जीअं तव्हां चयो पिया त उहो ख़बर न पवंदी आहे खोड़ सारे मरीज़नि खे त असांखे जेको आहे इन्फेक्शन आहे या बाक़ाइदा एक्टिव थी चुकी आहे, त पोइ प्रिकॉशन्स इलाही ज़रूरी आहे। प्रिकॉशन्स सां गॾु उन माण्हू खे डिप्रेशन सां बचाइणो आहे असांखे। छो जो असां आइसोलेट कंदासीं माण्हू डिप्रेशन में हली वेंदो, उहा वरी डिप्रेशन क्रॉनिक थींदी त लीड टू सुसाइड। डिप्रेशन एॾी वॾी ख़राबु शइ आहे। जीअं तव्हां ॾिसो न, एंज़ाइटी ऐं डिप्रेशन कीअं डिफ्रेंशिएट कंदा आहियूं। एंज़ाइटी फॉर फ्यूचर, हाणे मसइलो सुभाणे मुंहिंजो पेपर आहे त मुंहिंजी एंज़ाइटी आहे, पेपर खां पोइ एंज़ाइटी ख़तमु, भले पेपर भलो थियो या ख़तमु थी वेंदी एंज़ाइटी, पर रिज़ल्ट आई आहे ख़ुदि न ख़ासि त मां फेल थियो आहियां। हाणे डिप्रेशन आहे, मां सोचियो मां फेल थी वियो आहियां, मुंहिंजो कार कल्टी थी वई, दुकान ॿुॾी वियो। हाणे डिप्रेशन नीड्स टू सुसाइड। असां मरीज़ खे हौसलो ऐं उनखे सुठे अख़लाक सां पेश अचणु, उनखे बाबा हिमथाइणु ख़ैरु आहे। दवा इस्तेमालु कयो तव्हां, मास्क इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां ठीकु थी वेंदो इंशाल्लाह। ऐं ॿियो जीअं TB दवा हलाइण खां पोइ जीअं साल आहे, 1.5 साल जीअं मां अर्ज़ु कयो पहिरियां, त इन जा असांजे जिस्म ते मुज़र असरात दवाउनि जा हूंदा आहिनि। सही डॉक्टर साहब, हिते हिकिड़ो सुवाल जेको ज़हन में क्लिक करे पियो त हिन डिप्रेशन जो डिफेंस चाहे कीअं पाण खे बचायूं, हिन डिप्रेशन खां कीअं कढूं पंहिंजो पाण खे असां? ॾिसो, डिप्रेशन त हिकु अलॻि मौज़ू आहे, पर अगरि हिन बीमारी सां रिलेटेड डिप्रेशन आहे त उन मरीज़ खे जेको आहे उमेदु ॾियारिजे वधीक, ऐं उहा ॻाल्हि विसारण जी कोशिशि कराइजे। अहिड़ी शइ उनखे मसरूफ़ ऐं बिज़ी कजे, माहौल चेंज कजे। ऐं हूअं बि TB लाइ आयो त उनखे साफ़ु सुथरे खुलियल माहौल, तव्हां ॾिठंदा हूंदव त जीअं कोटड़ी में TB जो वॾो हिकिड़ो इस्पताल आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो, या हिते पाण ओझा में बि आहे कराची में। त उते जॾहिं पुराणे ज़माने में इस्पताल हूंदी त उनखे ईअं हूंदो त विच में वार्ड हूंदो ऐं पासनि खे विरांडा हूंदा। उन विरांडे में ॼारियूं लॻल हूंदियूं त वरी हवा लॻे त जीअं इहो कॉन्सेप्ट हूंदो जरासीम हवा में ॿाहिरि निकिरी वञे। लेकिन हाणे बीमारी जेके इस्पतालूं अॼुकल्ह जदीद ठही वियूं आहिनि, बाबा बंदि इस्पतालूं, ऑनलाइन सिस्टम आहे, लिफ्ट आहे, एसियूं आहिनि, इन जे करे बीमारी ते कंट्रोल करणु मुश्किल थी वियो आहे। त इन जे करे अगरि उन मरीज़ खे असां थोरो साफ़ु सुथरे माहौल में, ॿनिनि ते, ॻोठनि में के खुले माहौल वठी खुले माहौल में वठी था वञो। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन की पाण गाल कयूं पिया, डॉक्टर सदफ साहिबा, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसके रेशो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं, क्या ऐसा हुआ है कि उनको वहाँ आके पता चल रहा होता है कि वो TB में मुब्तला हो चुके हैं? क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोलर हैं आप, तो इस हवाले से हमें बताएं कि रेशो क्या होता है मरीज़ों का जो डेली वेजेस पे आ रहे होते हैं, जिनको वहाँ पर आकर बाद में पता चलता है कि हम TB इन्फेक्टेड हैं। बिल्कुल, जिससे हमारे पास जो है, जो मैं जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो उसके लिए टेस्टिंग के लिए AFB स्मेयर्स के जो सैंपल्स
آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ہمارے پاس سپوز جیسے 5 میرے پاس AFB اسمیئر آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے میرے پاس 1 میں TB کا وہ مریض ہوگا. تو یہ کہ ہم ایز اے اس کو جو ہے پھر ڈائگنوسس کر کے بتاتے ہیں کہ جو ہے ٹی بی ہے اس کو نا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ہے نا ٹی بی کے جو ہے کہ زیادہ تر ڈاکٹرس ہیں وہ ٹی بی کے آپ کے پاس 3 کنسیکیوٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک بار اپنا AFB اس میں کروا لیا, اس کے بعد آپ کی جو ہے جو رپورٹ نیگیٹو میں اب ہوگی, پھر اس کے بعد آپ کا ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جب ٹی بی آپ کی جب ختم ہو رہی ہوتی نا اس کے اینڈ میں بھی جو ہے ڈاکٹرز جو ہے یہ 3 آپ کی جو ہے 3 بار آپ کو ٹیسٹ اس میں کروانا ہوتا ہے ٹو میک شیور, اوکے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کی ٹی بی جو ہے یہ اس جو ہے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے. صحیح. اچھا اب ایک چیز اور کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹی بی میں ڈپریشن کے حوالے سے نا میں چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے نا وہ چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو, اس میں جو ہے ہمیں مرض سے نفرت کرنی چاہیے, مریض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی آپ نے, کیونکہ یہ انسانیت کا احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جی آپ جو ہے وہ اس مرض کی ایریڈیکیشن کے لیے, اس مرض کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اس مریض کا ساتھ دیں, لیکن اس مریض کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہرگز نہ اپنائیں کہ وہ خود اپنے آپ سے جو ہے بیچارہ وہ جو ہے ایک دم سے مایوس ہو جائے کہ مجھے اب یہ بیماری ہے. وہ چاہے ہم دیکھیں آج کل جیسے اگر ہم کووڈ-19 کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو کووڈ-19 کے حوالے سے بھی یہی تمام ہمارے پاس جو ہے جو ہم پریکاشنز ہیں کہ جو اس کے جو وہ اس کا مریض ہے جو کرونا وائرس کا, اس کے کھانسنے سے, چھینکنے سے, اس کے جو ہے ڈراپلیٹ سے ہمیں جو ہے دور رہنا ہے. لیکن اس میں بھی اس مریض کو ہمیں سائیکولوجیکلی بھی طور پر اور فزیکلی طور پر بھی اتنا اکیلا نہیں کر دینا کہ وہ بیچارہ بالکل جو ہے ایک طریقے سے جو ہے زندگی سے ہی بالکل مایوس ہو جائے اور پھر ڈپریشن میں چلا جائے. کیونکہ دیکھیں آفٹر ڈیزیز آپ کی وہ بیماری ختم ہو گئی, لیکن جو فیز آپ نے اور پھر جو اس مریض نے جو فیز گزارا ہے نا وہ اس کے لیے ایک لائف ٹائم کا جو ہے سبق ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو جو ہے اپنے سائیکولوجیکلی طور پر اس کو آپ نے اوور کم کیا, اور آپ کے فیملی ممبرس نے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے کس حد تک آپ کو سپورٹ کیا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹی بی کا مریض ہے, کووڈ-19 کا مریض ہے, آپ اس کے ساتھ گلے مل کے بیٹھیں, اس کے ساتھ آپ بالکل کلوزلی بیٹھیں, لیکن آپ کا ایک جو کو فیل نہ کرائے کہ وہ اکیلا ہے. صحیح نا, بیسکلی ہمیں صرف یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں مرض سے نفرت کرنی ہے, مریض سے نفرت نہیں کرنی. مریض کو ہمیں اپنے پاس ایسے بالکل اس کو رکھنا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں, آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہو, آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے کیور ہو کر واپس ایک ہیلدی لائف اسٹائل میں واپس آ چکے ہیں, ہے نا. یہ ایک ہمیں بہت خوبصورت بات کہی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے. اچھا ڈاکٹر سمجھ صاحب چھاکاڻ ته खोड़ सारा माण्हू ईअं सम्झंदा आहिनि त असां प्रॉपर नमूने सां प्रॉपर्ली असां इलाज पंहिंजो वरितो आहे ऐं असां मेडिसिन वरितियूं आहिनि, असांजा क्लियर थी चुका आहिनि 18 महीना, उनखां पोइ हू छा कंदा आहिनि ऑटोमेटिकली पाण ई डायग्नोस करे वठंदा आहिनि त सिम्टम्स ख़तम थी चुका आहिनि, हाणे असां बिल्कुलु ओके आहियूं. त उन वक़्तु तव्हां उन मरीज़नि लाइ छा चवणु चाहींदो जेके पंहिंजो पाण खे पाण ई ओके सम्झी करे वरी डायग्नोस लाइ वेंदा ई न आहिनि, त उन्हनि लाइ छा चवणु चाहींदो? उन्हनि खे अचणु घुरिजे, ज़ाहिर आहे विज़िट करणु घुरिजे उन्हनि खे. दवा शुरू कराईंदा आहियूं जी त मेडिसिन शुरू करण खां पहिरियां असां टेस्ट में पॉज़िटिव ईंदो आहे, जिन खे AFB सीमेर पॉज़िटिव आहे, जीन एक्सपर्ट आहे, या का बि असांखे क्लू हूंदो आहे जिन खे TB आहे, त ATD शुरू करण खां पोइ जेको एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग शुरू करण खां पोइ 2 महीननि ते असां हुनजो AFB रिपीट कराईंदा आहियूं. अगरि नेगेटिव अची वियो त पोइ असां इन खे चइबो आहे इनिशिएटिव फेज़, जेको 2 साल 2 महीननि जो आहे, पोइ कंटिन्यूएशन फेज़ में अची वेंदो फॉर 4 मंथ. अगरि उन में पॉज़िटिव अची वियो 2 महीननि खां पोइ त असां इनिशियल फेज़ जेको उन खे 1 महीनो वधीक करे पोइ वरी कराईंदा आहियूं. त उन खां पोइ जेसि ताईं नेगेटिव ईंदो आहे तेसि ताईं असां इनिशिएटिव फेज़ कंदा आहियूं, पोइ कंटिन्यूएशन फेज़ में हाणे उन खे कंदा आहियूं. पर आख़िर में जेको AFB कराइणु तमामु ज़रूरी आहे त क्या मरीज़ क्यूअर थियो आहे या सिर्फ़ु दवा जो वक़्तु पूरो थियो आहे, लेकिन मरीज़ खे अञा ताईं बीमारी आहे, अञा ताईं आहे. छाकाणि त जड़ खां बीमारी कीअं ख़तमु थींदी इन खे वरी थोरो डिटेल में तव्हां खां मां पुछणु चाहींदमि, पर साही जो वक़्तु थी चुको आहे. त व्यूअर्स हलूं था नंढड़ी साही जी तरफ़, ऐं साही खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं. ब्रांच जा तकड़ में मां नाला वठंदी हलंदमि, छाकाणि त प्रोग्राम में असां सां जिन तावन कयो आहे उन्हनि में आहिनि टेंग रमदान, जेज़ बैंक, गोल्ड फाइनेंस, ऐं उनखां अलावा टपाल, मेज़बान सो जमालो, 4AB सोप, लाइफ बॉय शैम्पू, अंसरी रेजिडेंसी, मेहरान बचत पैक पारां असां सां प्रोग्राम में तावन
तावन किया है। तंहिं करे काॾे न वञिजो, जल्दी अवां जी खिदमत में हाज़िर थींदासीं। स्टे विद अस। विवर्स हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार ॻाल्हि कयूं पिया, छाकाणि त 24 मार्च आलमी ॾिहाड़ो आहे टीबी जे हवाले सां, ऐं आख़िरी कुझु घड़ियूं आहिनि। हिन कुझु घड़ियुनि में मां चाहींदमि त असां पूरे हिन टॉपिक खे समराइज़ कंदा हलूं त बेसिकली हीअ जेका बीमारी आहे इन जो जॾहिं परहेज़ कयो वञे थो त केतिरो परहेज़ ऐं कीअं कयो वञे, छाकाणि त खोड़ सारा माण्हू सभु कुझु खाइण पीअण बंदि करे छॾींदा आहिनि। त उहो उन जे हवाले सां डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं। ऐं हिकु अहिड़ी ॻाल्हि, हिकु अहिड़ो सुवाल जेको तमामु इम्पोर्टेंट आहे डॉक्टर समद साहब, छाकाणि त खोड़ सारा माण्हू दवाऊं वठंदा आहिनि त हर कंहिंजी जेका स्किन आहे उहा सेंसिटिव हूंदी आहे, त ईअं ई असांजी बॉडी जो जेको अंदरूनी हिसो हूंदो आहे उहो बि तमामु घणो सेंसिटिव थी सघे थो। खोड़ सारे माण्हुनि जो अलॻि अलॻि हूंदो आहे। त छा था सम्झो अवां त अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके 10 महीना अगरि दवा वठनि था त उन्हनि जी बॉडी इन्फेक्टेड थी वञे, त उनखां पोइ उहो छा कनि, दवा खां पोइ उहो छा कनि अगरि उहो इन्फेक्शन उन्हनि खे थी थो वञे? ॾिसो, जेका ATT ड्रग्स आहिनि उन्हनि जा पंहिंजा बि मुज़र असरात जिस्म ते आहिनि। के ड्रग्स अहिड़ियूं आहिनि जेके लिवर खे डैमेज कनि थियूं या लिवर ते इफेक्ट कनि थियूं, कुझु अहिड़ियूं आहिनि जेके किडनीज़ ते कनि थियूं, ऐं कुझु सेकेंड लाइन ड्रग्स आहिनि जेके स्किन खे इन्वॉल्व कनि थियूं। त उनजे करे पोइ ॾिसबो त कहिड़े स्टेज ते कहिड़ी ड्रग जेको आहे असांखे इन्वॉल्व कयो या मुतासिर कयो। लेकिन इन लाइ इहो आहे जॾहिं बि अगरि दवा शुरू करण खां पोइ अखियुनि ते पीलो ज़ाहिर थिए या जेको आहे बुख वरी घटि थी वञे, पेशाब जी मिक़दार जेका आहे घटि थी वञे या ॻाढ़े रंग जो पेशाब अचणु शुरू थी वञे, त उन लाइ फ़ौरन उन डॉक्टर सां रुजू कजे। ऐं जेको कंसल्टेंट फिज़िशियन ख़ुसूसी तौर ते जेको इंटरनल मेडिसिन जो हुजे उन खे ॾेखारिजे, त पोइ ड्रग्स जे बारे में उनजे मशवरे खे वठो वञे। लेकिन असां जेतिरे ताईं ॾिसूं पिया जेके अहिड़ा मरीज़ असां वटि ईंदा आहिनि, असां ऐं हिकिड़ी गाइडलाइंस बि इहा आहिनि त तमामु ड्रग्स जेको आहिनि 6 हफ़्तनि लाइ बंदि करे पोइ वरी जेको उनखे LFT आहे या RFT आहे, मां लिवर फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन उनखे रिपीट करे जेका बि ख़राबु हूंदी आहे उहा नॉर्मल थी वेंदी आहे, त पोइ असां आइसोनियाज़िड खां शुरू कंदा आहियूं ॿीहर फिराम मिनिमम डोज, माना हेठि खां घटि कबो त मैक्सिमम लाइ वठी वञिबो, पोइ सेकेंड ड्रग एड कबी वञिबी, पोइ थर्ड एड कबी, पोइ ॾिसबो अगरि का ड्रग जेका उन शइ ख़राबु करे पोइ उन खे वरी बंदि करे उन जॻह ॿी स्टार्ट मतिलबु पेशेंट जी बॉडी ॾिसबी त उहा अफोर्डेबल आहे त उनखां पोइ उनखे उहा दवा असां ॾेई सघूं था। लेकिन जीअं का औरत आहे मसइला हामला थी वई आहे या हमल सां आहे असांखे पोइ जेको आहे बीमारी ज़ाहिर थी आहे, त उन जे लाइ जीअं स्ट्रिप्टोमाइसिन ड्रग आहे उहा एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड आहे, उहा असां न ॾींदा आहियूं छो उन जा ॿार जी बनावट ते मुज़र असरात आहिनि। हा, ऐं पोइ माउ जे लाइ ऐं ॿार जे लाइ हानिकार थी सघे थी उहा। तमामु अहम ॻाल्हि कई डॉक्टर साहब तव्हां इहा, त असांजे जेके व्यूअर्स ॿुधनि पिया था त हामला औरतुनि लाइ अलॻि सां ट्रीटमेंट थोरो चेंज कयो वेंदो आहे। त डॉक्टर साहब असां वटि डॉक्टर सदफ़ साहिबा आहिनि। हिकु सवाल जेको पहले भी हमने बात की थी कि जंक फूड्स जो हैं वो ज़्यादा खाने को दिल कर रहा होता है, लेकिन इस बीमारी या किसी भी बीमारी में परहेज़ ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब और हम जब ब्रेक में थे ये बात कर रहे थे कि लोग इतना परहेज़ करते हैं कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं, तो इस बीमारी में ये भी तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दें, हेल्दी फूड का अप्लाई करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो है आप ऐसी हेल्दी डाइट लें जिसमें जो है तमाम आपके पास वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वो तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसे कि अभी हमें बात हो रही थी कि जब हम इतनी सारी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन तमाम जो है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जो दवाइयाँ हम इंटेक कर रहे हैं उसके लिए भी हमारी बॉडी में जो है पावर चाहिए, है ना, और वो पावर आपको मिलेगी हेल्दी डाइट से। सही, तो हेल्दी डाइट का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन हेल्दी डाइट से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो है ना उसमें मॉडरेट करें। कुछ लोग समझते हैं कि हेल्दी डाइट से जो है मुरादें बहुत ज़्यादा जो है मुरगन, तेल वाली ऑयली फूड्स, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है बॉइल्ड चीज़ें। ना आप इस तरफ जाएं ना आप इस तरफ जाएं, आप बीच में रहें। बीच से मुराद ये कि आप एक ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिसमें आपके पास प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, हर चीज़ आपके पास एक मुतदिल, आपकी एक जो प्लेट होती है ना उस प्लेट में आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सैलेड का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, प्रोटीन से जो है भरपूर डाइट का इस्तेमाल करें, जैसे पहले हमने बात की। हाँ बिल्कुल, और बस अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें।
جنک فوڈ کا استعمال نہیں کریں, بالکل بھی کیونکہ نہ وہ کریں. چیزیں آپ کو صحیح. کیا ہوتی ہیں, آپ جس چیز کا آپ کا علاج ہو رہا ہے نا, آپ کے علاج میں بھی ایک تو جو ہے ڈیلے ہوگا, اور پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ اور بھی بیماریاں آپ کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں. یعنی کہ آپ کو جو اگر آپ بہت زیادہ انہیلدی جنک فوڈ باہر کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, تو آپ ایک تو آپ کو ہائپر ٹینشن کی بیماری ہو سکتی ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی دل کی بیماری ہو سکتی ہے, اوبیسٹی کا جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایک ٹی بی کا مرض جس سے ابھی آپ فائٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی اور بیماری نہ لگ جائے. بالکل. اور اس میں آپ کا ہیلدی ڈائٹ, اور پھر یہ کہ ہیلدی تھنکنگ اور ہیلدی انوائرمنٹ. صحیح, بہت یعنی کہ پازیٹیو آپ کا جو ہے, آپ کا ہر لحاظ سے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. پازیٹیو تھنکنگ آف مائنڈ کے ساتھ آپ اپنا علاج کروائیں. کیونکہ جس بھی بیماری کا علاج جو ہے نا, صرف اگر آپ اینٹی بائیوٹکس یا ادویات استعمال کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو نہیں ہے, آپ جا رہے ہیں نیگیٹو سائڈ کی طرف, آپ کے ذہن میں ہر وقت جو ہے منفی سوچیں کہ میں صحیح ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, میرے ساتھ اب کیا ہوگا, تو وہ میڈیسنز بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی. میڈیسن پلس ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور ایک ہیلدی مائنڈ, یہ تینوں چیزیں جو ہے مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی جو ہے بیماری کو مکمل طور پر ختم کرتی ہیں. کیا بات ہے, کتنی خوبصورت انداز میں سمرائز کیا ڈاکٹر صمد نے بھی اور ڈاکٹر صدف صاحبہ نے بھی. تو ویورز تمام بہترین ایک ڈسکشن رہی ہے, ڈاڈی فروٹفل ڈسکشن. کوشش ہوئی تو جترا سوال مجھے